ASN में हम लोग ने एक्चुअली हिंदी में रिलीज करने की कोशिश की मगर for some reasons we couldn't release it in theaters. And finally, 777 Charlie is releasing in theaters. And not that every film has to be a pan-India film, but for 777 Charlie, we have a very strong reason why we should be releasing this film in the north as well. Because we find that even in the north there are dog lovers, and this is a market we are trying to tap. We have given like 167 days of shoot and 3 years of commitment to this film. Director साहब ने तो 5 साल की commitment दी है, and there's a lot of passion and dedication which has gone behind the making of the film. तो इतना साल के बाद when you have given so much to the film, we thought कल जाके हम लोग 777 Charlie, I think same team we can't recreate it. It's that difficult to shoot with a dog and to do what we have done in 777 Charlie. So this is why we thought releasing this film is the best thing to do and reach the wider audience. आपने एक साल पहले गाना भी रिलीज किया जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, और उसके बाद फिल्म आप रिलीज कर रहे हैं वो तो एक प्रोडक्शन को किस तरह का था, एक कितनी डिफिकल्टीज या क्या क्या चीज़ें फेस किया आपने, अच्छी बुरी दोनों? In the sense to make this film. Yeah. Preparation तो मतलब compared to all my films, I think the experience what I've had in this film is completely different, because as I said, shooting with Charlie is not easy. Screen में देखने के time पे I think you enjoy the emotions and you laugh, the humor and all, but shooting करने के time पे it is as difficult as that. संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब यू वर शॉर्टलिस्टेड अमॉन्ग मेनी अदर फीमेल एक्ट्रेसेस, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर द फिल्म स्पेशली विद चार्ली? यस, एक तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि इस मूवी मुझे करना ही है. जब मैंने एक पोस्टर देखा था जहाँ पे लिखा था लुकिंग फॉर द फीमेल लीड, पर जब मुझे पता चला कि डॉग के साथ मेरा इंटरेक्शन भी होगा, मुझे लगा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत फन होने वाला है. इंडीड बहुत मुश्किल था, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि जब डॉग को परफॉर्म करना पड़ता है, उसको नहीं पता उसे एक्टिंग करनी, तो उसे करवाया जाता है क्योंकि उसको फुट का ड्राइव फुट दिखा के. तो हम लोग को ऐसा करना पड़ता था अक्सर कि फुट को हमें अपने मुँह में रखना पड़ता था ताकि वो हमारे आंखों में दिखे. और ऐसा बहुत बार हुआ है कि पीछे प्रमोटर जो उनकी ट्रेनर है, तो वो पीछे से कमांड दे रहे हैं और हमें अपना डायलॉग बोलना पड़ता, तो हम लोग को मल्टीपल टास्क करना पड़ता था. एक तो उसे परफॉर्म भी करवाना है, वहाँ से वो भी कमांड दे रहे उसको इग्नोर करना है, तो बहुत सारे टास्क एक साथ करना पड़ता था. बहुत पेशेंस चाहिए था हमें, तो थ्रू आउट द फिल्म सब लोगों को पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है. Okay, and Rakshit ji, you have dubbed for this film, so why not you have taken a dubbing artist, and why you have not why you have dubbed for own? थोड़ी बहुत हिंदी बात कर सकता हूँ. तो and हमारे जो डबिंग कोऑर्डिनेटर है संजय जी, आई थिंक ही पुश्ड मी. मैं ASN में भी एक्चुअली डब किया था, तो एंड वहाँ पे तो ज़्यादा डायलॉग्स था, so he was very sure that I should be dubbing for this film, and इसमें थोड़ा डायलॉग्स कम है, इमोशंस ज़्यादा है. So yeah, to project the right emotions the right way, I think only the artist can do it. I mean, और एक डबिंग आर्टिस्ट आके even when they try to give that voice, the emotions don't come very naturally. So I thought. Rakshit ji, would you want to release more of your films in Hindi? If as I said, not every film has to be pan-India, right? There are few films which probably when you see there is a market, then you should tap it. Rakshit ji, tell us about Danish Sheikh and other actors, Rajvi Shetty. They are all like good actors. Tell us about that. Working with them. So Danny has played a very he comes in one scene as a guest role, and he plays a reporter. When you watch the film, you will get to know. Rajvi Shetty is a dear friend, and when the director asked him to play the role, he was not very sure then. But then probably he wanted to be a part of a good film. He knew because he was involved in the dialogue writing of the film in the Kannada version. So he knew the script. Rakshit sir, Nifty movie is Swagata.
what has actually influenced you to make this movie? Human और जो होता है animal, दोनों के emotion को आपने बयां करने की कोशिश की है basically. तो ऐसी क्या बात है जो आपको influence की और आज के दौर में ये फिल्म लोगों के सामने पेश करे? So I think the one thing which I loved the most when I read the script was that I mean हम लोगों ने बहुत सारा डॉग फिल्म्स देखा है, मतलब all over the world there are many dog films. Although इंडिया में कभी मतलब रिसेंट पास्ट में कभी आया नहीं है, मगर वर्ल्ड वाइड तो हम लोगों ने बहुत डॉग फिल्म्स देखा है. But what is special about 777 Charlie is that the internal journey of a very introvert character called Dharma, who is a complete loner, जिसका जो अपने नेबर से भी बात नहीं करता, जिसका फैमिली नहीं है, and he doesn't have friends, no colleagues talk to him, that kind of a loner. When a dog comes into his life, how his life changes, what are the internal changes which happens inside him, and also the journey, Charlie और उसका journey जो है, especially in the second half, they go on a travel from Mysore to Kashmir, and in that travel the kind of experiences what he has, which he has never had before. I think both the external and the internal journey of Dharma is what I found very interesting. And by the end of the climax, this film is very much inspired from if you have read the last chapter of the Mahabharata, where the Pandavas leave to the heaven after the Kurukshetra war and all that. One by one among the Pandavas they died, but the Yudhishthira and the dog, Yudhishthira reaches the gate of the heaven, but there is one dog which has come with him, and that is the crux of this film as well. वहाँ पे मगर Yudhishthira takes the dog, but here the dog takes Dharma, and by the end of the film there is a very surreal environment which is created visually and in terms of audio and the way it is designed, that it's an experience which probably you wouldn't have had in any other film. the promotion strategy is very unique. कई सारी जगह वीडियोस आपने रखे हैं, वहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एडॉप्शन ड्राइव डॉग्स के वो इस तरह का एक अलग तरह का मूवमेंट जो काफ़ी सराहा जा रहा है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? In the sense, if you watch the film, by the end of the film, you'll know that मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, और आप अगर डॉग लवर नहीं हैं तो by the end of the film you will become a dog lover, and probably you would want to adopt a dog. So film में end में the message is also that, and I'm sure it will move a lot of people who watch the film. And the dog adoption campaigns what we are driving right now is also in align with the film. रक्षित जी, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों की फिल्म के आप दोनों ने डॉग के साथ तो काम किया ही किया, आप लोग के लिए बहुत टफ था, बट आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ काम करके आप लोग को कैसा लगा? How was the experience working with both of you? चार्ली के साथ काम करके इतना डिफिकल्ट था ना कि बाकी कोई इंसान के साथ एक्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है. एंड संगीता एंड मी वी हैड few very comedy kind of the sequence throughout the film. Even when there is this, even if it is a serious sequence, she is to make me laugh. चार्ली तो हमेशा बहुत लेती है, and she used to make me take a lot of takes as well. सर, संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे. आने वाले हफ्ते में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म आने जा रही है 777 Charlie. 40% जो है आपको बता दो इंटरेस्ट अभी चल रही है ऑन IMDb. सो इस तरह की फिल्म आज के दौर में आना और इस तरह का रिस्पॉन्स हासिल करना, यू एज अ फिल्म मेकर आपको कितना अलग फील? I feel really proud, obviously, because especially when you have given so much to the film, and when that film when it is getting, even before the release, अगर response इतना अच्छी हो, then obviously खुशी की बात. हीरो सर आप है या फिर चार्ली है? Definitely Charlie. हीरो हीरोइन सब चार्ली. फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है इतने बड़े बड़े कटआउट्स चार्ली के लगे. That is our dedication to her. I mean, for it, I think for her it doesn't matter at all. All that matters is she's only asking for food. Treat.
But yeah, it's our self-satisfaction that we have worked with her for 3 years and we wanted to do something. So tell us about the director Kiran Raj. The director. So Kiran Raj has been working with me, for last 8 years, including 777 Charlie. Before that, we have worked for 4 years together. He's been assistant director for Ricky and associate director for Kirik Party, one of the 7 odds, the writing team in Kirik Party. And after that, I think after the Kirik Party success, that's when he came and told me the story. And I immediately knew that I'm going to produce this film because he is one of the most passionate and dedicated filmmaker or associate director I've worked with. So I know that when as an associate director he is so passionate and dedicated. When he makes his own film, I was very sure that he's going to give his complete his 100%. That's what I look at. When I get a script, I see if the technical crew is good and the director is good. And if the script is good, I believe that the film is going to come out very nice. As we have seen already, Avni Jaiswal that took time to release in Hindi version. So, जो मुश्किलात आती हैं हिंदी में रिलीज करने की, वो इस बार आप रिलीज करें अच्छी बात है क्या आप आगे कोशिश करें कि हर एक फिल्म आपकी रिलीज हो हिंदी वर्जन? नहीं, हर एक फिल्म नहीं, डेफिनेटली हर एक फिल्म नहीं. आई थिंक मैं मतलब एक बार फिल्म रेडी होने के बाद देखना चाहूँगा कि कैसा आया है फिल्म. एंड इफ आई थिंक दैट ओके इस फिल्म को ऑडियंस पसंद करेगी और there is a market for this film, then probably that's when I would like to give it a try. सर पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से हमने देखा है कन्नड़ा सिनेमा जिस हिसाब से बूम हुआ है, लोग क्रेज जो है इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. क्या कहेंगे जिस हिसाब से जो बदलाव आया है? हाल ही में अभी KGF बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, आपकी फिल्म आ रही है, इसके बाद विक्रांत होना, मतलब लंबी कतारें लगती जा रही हैं. सो अब लोग ना सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा, ना तेलुगु सिनेमा, ना हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. सो अब इस नए चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन? आई थिंक द होल वर्ल्ड इज गोइंग ग्लोबल नाउ. हम लोग यहाँ पे बैठ के स्क्विड गेम देख रहे हैं जो हमारे लैंग्वेज में नहीं है मगर सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं. आई थिंक आगे जाके पूरे हर एक कंटेंट मोस्टली हर एक लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में डब होके आएगा क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि I think this is one of the biggest markets for any entertainment industry. So everybody would want to come here and tap this market. So and I think even when we are making a film, it doesn't matter from which industry we are making the film from. Ultimately, it's an Indian film, and the world is your market now. So if you have good content, then probably you should aim for the world. So what do you have to say about the audience who watches the film? What messages you want to give to the audience? As I said, you would have watched a lot of dog films, but I can promise you that 777 Charlie is a very different film. And the kind of experience what you will have watching this film, by the end of it, as I said, it takes you to a very surreal world, and the visuals and audio is in a complete different level, and probably it's like Dharmaraj going to heaven. So you'll have that experience, a very heavenly experience, a very divine experience. So don't miss it in theaters. Please watch it in theaters because the experience what you'll have in theater is very different from a smaller screen. सर रिचर्ड एंड धोनी भी इसके अलावा आपकी फिल्म आ रही है, उसके बारे में थोड़ा अगर बता सके और लास्टली फैंस को क्या कहेंगे, कन्नड़ा ऑडियंस और बाकी हिंदी ऑडियंस को? ऑडियंस को तो बोल दिया. हाँ, so Richard Anthony, it's going to be a prequel and a sequel of my first directorial called Ulidor Kannante. After 8 or 9 years, I'm revisiting that storyline and doing something very different from what I've done before. So Ulidor Kannante was basically about 20 different perspectives about 5 characters, which is leading to one incident. Whereas this film is about one character and where does his life start from a remand home to where I stopped in Ulidor Kannante, and there are 2 timelines basically. So one timeline is from his childhood to the incident of Ulidor Kannante, and the second timeline is from the incident of Ulidor Kannante to the climax where it goes and reaches next.
So both the stories intersect with each other, and they travel like that. It's a very unique kind of a screenplay. Probably you wouldn't have watched anywhere else. Not in Indian cinema, not outside us. So. Sangeeta ji, what do you have to say? Would you like to work in Hindi film more or in South films only? As even Ranjeet says that कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा लैंग्वेज में है. तो मेरे लिए इट्स द सेम. अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो वो हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कुछ भी चलेगा. मेरे को स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरे को दोनों इंडस्ट्री पसंद है ऐसे देखा जाए तो. एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी ये फिल्म के बारे में, मैसेज देना चाहेंगी? 777 चार्ली ना, तो 777 चार्ली एक ऐसा फिल्म है जहाँ पे आप एनिमल बॉन्ड विद ह्यूमन एकदम अच्छे से एस्टैब्लिश होते हुए देखोगे. और अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेट डॉग, एक कुत्ता जिसको आप ऐसे नॉर्मली इग्नोर करते हो, वो लाइफ में क्या क्या फेस करता है और एक इंसान को कैसे बदल सकता है. चाहे वो जितना भी इंट्रोवर्ट हो, चाहे पूरी दुनिया से बात ना करता हो, लेकिन एक कुत्ता उसके लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट ला सकता है कि वो उसका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है. यहाँ पे आप देखोगे कि एक इंसान उसके लिए मैसूर से लेके कश्मीर तक जाता है और इट्स अ जर्नी. और इस जर्नी को आपको थिएटर में देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस. ये बस एक मूवी नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल. सर लास्ट में कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक फिल्म आई थी थालिया बाग, जिसका रीमेक बना था तेरी महारानियाँ हिंदी में. अब चार्ली भी आ रहा है, तो अब पुरानी जो फिल्में हैं उसको भी लोग रेफरेंस के तौर पर देख रहे हैं और कन्नड़ा इंडस्ट्री को काफ़ी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से कन्नड़ा इंडस्ट्री से ही इस तरह की इनिशिएटिव किए जा रहे हैं? मतलब आई थिंक कन्नड़ा इंडस्ट्री से अच्छे फिल्म्स बहुत टाइम से आए. अगर और एज यू सेड तालिया बागिया वाज व्हाट इन 80s और 90s, तभी भी रीमेक हुआ है बहुत. बट आजकल ज़्यादा फिल्म्स रीमेक होने लगे. एंड आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ द न्यू जनरेशन फिल्म मेकर्स हु हैव कम इन द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री. I believe there's more to come. I mean, we have just started now. Another 5 years down the line, probably we'll watch at least 15 to 20 more films like this coming. Thank you. कहना चाहेंगे मैसेज ये आ रहा है लास्ट डायलॉग है ट्रेलर में जहाँ पे काफ़ी आंसू आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ अगर डायलॉग बोल सके आप? पूरा फिल्म देखो आप, पूरा फिल्म में इमोशंस बड़े बड़े. You will smile, you will laugh. And you will have tears rolling over from your eyes, but still it will make you smile. Yeah, so it's filled with that. Thank you. After so many drafts and so many correction by himself, and after the correction he wanted me to play a role of veterinary doctor, so I play a role of veterinary doctor in the film. So I'm a reluctant actor in the sense that I always prefer direction or writing more than acting. But when Kiran Raj wanted to play a role of a veterinary doctor who gives a comic relief in the film, so I was a little reluctant because the role is a little louder than what I normally do. But fortunately he believed in me, and fortunately he thought I would play this or pull off this role. And now I'm very happy. The way the film looks and the way my character looks, I'm very happy about it. इंडियन आइडल से लेकर अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? और सिंगिंग मिलाती है, फिल्म में गाना भी गाया है तो हिंदी वर्जन में, तो कैसा रहा गाना गाना? देखिए 2 लाइन आप सुना सकते हैं? बिल्कुल. इंडियन आइडल से लेके अभी तक जो जर्नी रही उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे बहुत बड़ी फिल्मों में गाने, लाइक पीके एंड गोमर सॉन्ग एंड ऑल, टर्की छोकरो. बट ये जो 777 चार्ली जो फिल्म है, इस फिल्म में अगर आप हिंदी वर्जन में गाते हो, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के सिंगर्स में से आपको अगर मौका मिलता है, हालांकि सब टैलेंटेड लोग हैं, मैं किसी को वो नहीं बोलूँ, बट मुझे ये मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर किरण राज एंड मिस्टर नोबिन, रक्षित भाई, राज भाई, पूरी टीम को थैंक्स कि मुझे ये मौका मिला, कि मुझे ये मौका दिया. बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज साउथ की फिल्में जो होती है, जैसे कन्नड़ हो या कोई भी लैंग्वेज की फिल्म, 5 लैंग्वेज में फ़िल्म बनाना बहुत बड़ी बात होती है. और चार्ली और अक्षित भाई का जो उस फिल्म में दोस्ती है
और वो ये दोस्ती बहुत पसंद आने वाली लोगों को। और मेरे एक्चुअली 2 गाने हैं इसमें, एक टॉर्चर सॉन्ग है और एक द जर्नी सॉन्ग। सो टॉर्चर सॉन्ग मेरा मतलब ज़्यादा फेवरेट है, बाकी सब बहुत अच्छा म्यूज़िक है। सो मैं 1-2 लाइन आप सबके लिए। जैसे जैसे हो पधारे दूर देश से मेरे कोई चाचा, ना होटल ठहरे शहर में है जो अपना भांजा, रात रात मुझे जगाए डांटू दो भी बाज न आए, रात रात मुझे जगाए गिन रे भाई चार्ली। दिस इज फॉर चार्ली। यस, सो थैंक यू। आप बताइए आप जाना चाहिए चार्ली को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और मतलब फिल्म में कुत्ते को बहुत मुश्किल होती है, वो एक्टर्स को भी, और मतलब डॉक्टर खुद को कितना मुश्किल आपके लिए रही है? Yeah, I was training Charlie from last 4 years for this movie actually. So the only thing which helped me out to make this task easy for Charlie was like my science-based approach training, which is called as a dog science. Science behind the dog. So since I had studied about the psychology of the dog and the science behind the dog, all this activities for the Charlie, it made me very easy to teach her that. And yes, initially it was we had planned this movie to be completed within 8 months, but when we started to shoot the puppy portion, we got to know that this 8 months is not enough. It would go around like beyond 2 years, but we never thought that it's going to be 4 years. The reason we took 4 years was that the location was demanding, the time was demanding, the execution was demanding, the training was demanding, and as well the practice as well. So this was the reason we took 4 years. And firstly I have to thank Ranjeet sir and Kiran sir for giving us this opportunity to train Charlie. They had a complete hope on me, the faith on me that we would complete this project. Yes. राजवीर शेट्टी से आपसे ये सवाल है, हर एक कैरेक्टर जो आपका हमने देखा, माया बाजार हो, गरुड़ा गमना, वर्षा विभाना, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। कितना प्रिपरेशन वक्त लेते हैं आप एक एक्टर के तौर पर किसी रोल के लिए, कितना वक्त लेते हैं? बिकॉज हर एक कैरेक्टर में आप छाप छोड़ते हैं, इट लुक्स इम्प्रेसिव। हाउ मच टाइम यू टेक टू प्रिपेयर फॉर रोल? With Charlie, I didn't need much preparation. The reason being, he's a veterinary doctor, so I have 8 dogs at home. So in that sense, I was always with dogs, and I know how veterinary doctors normally love, because it's not easy to become a veterinary doctor, because unless you have love towards your pet or love towards animals, I don't think anybody will become veterinary doctor. Because it's a challenging job and it's a thankless job many a times, because the way we expect unrealistic expectation from them. Every time our pet is sick, we always blame a veterinary doctor. But I have a very good relation with a veterinary doctor called Yashasvi. I really know how much he cares. So, and then with that, I really trusted Kiran Raj when he entrusted this role on me. And with other roles, with Garuda Gamana or Maya Bazaar, I always make sure that I always wear the costume of the character, or I really go behind the psychology. Sometimes with Garuda Gamana and all, I have taken 1.5 months of preparation to become that character. Maya Bazaar, at least the language, the style, the body language, to at least 2 weeks. So it depends on every single character, I think. Any other project that you want to share? Right now, I haven't started writing anything as a writer because of the promotion of Charlie and everything. After I finish this, I need to write something of my own. Anything you want to share to the audience lastly? And I really request, so you can hear that's Charlie's voice. Yeah. So she's speaking. Yeah. So Yeah, Charlie. what we really want to say is, this is a project which has taken a lot of sweat, determination and struggle. So every film actually needs that, but this film, with that, it is always, the team believed that we need to give you an experience in theatre. So the entire team, including Rakshit and Kiran Raj, has made a beautiful film which gives you a beautiful experience. I really expect you to watch the movie on June 10th when it releases near the theatre near you. And if you like the movie,
do share the experience with others and do support a good film. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.